Hello and welcome to this evening bulletin. This is Manoj Dara. Bitcoin was trading at around $19,000. Investors were pondering the implication of the historically high volatility in cryptocurrencies. Blockchain analyst firm Into the Block's data showed that the Bitcoin's 30-day price volatility was at 31%, the lowest in almost 2 years. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, was trading at $19,000, down 1.5%. Ether followed a similar trajectory and was trading lower by 1% at $1,285. A drop in weekly jobless claims suggested a continued strong labor market. 3-verse IC15 index was trading down by 0.96% at 27,195 points. ग्लोबल पुलिस बॉडी ने एक बयान में कहा, इंटरपोल ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी 90th जनरल असेंबली के दौरान दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पहले मेटावर्स को लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से चालू इंटरपोल मेटावर्स रजिस्टर्ड यूजर्स को बिना किसी ज्योग्राफिकल या फिजिकल बाउंड्रीज के लियोन, फ्रांस में इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर्स के एक वर्चुअल रेप्लिका का दौरा करने, अपने अवतार के माध्यम से दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत करने और यहाँ तक कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इमर्सिव ट्रेनिंग कोर्सेज लेने की अनुमति देता है। Crypto custodian Prime Trust agreed to return roughly $17 million in tokens to crypto lender Celsius Network in a bankruptcy court hearing on Thursday. Celsius has sued Prime Trust in August, alleging that Prime Trust had improperly withheld the tokens when the two terminated their contract in June 2021. The assets, made up of 398 BTC, 196,268 Celsius tokens, 3,740 ETH and 2.2 million USDC, valued at roughly $17 million, were tied to Celsius yield product customers in Washington State and New York. Prime Trust held $119 million of Celsius assets at the time the contract was ended. Celsius filed for Chapter 11 bankruptcy protection in July. फर्म ने गुरुवार को कहा, स्टेबल कॉइन इशूअर टीथर 3 नवंबर से ब्राजील में 24,000 एटीएम्स पर टीथर यूएसडीटी उपलब्ध कराएगा। टीथर ब्राजील के क्रिप्टो सेवा प्रदाता स्मार्ट पे के साथ एक समझौते के माध्यम से यूएसडीटी को ब्राजीलियाई रियल में परिवर्तित करने में सक्षम करेगा, जो कि एक स्थानीय कंपनी टेक बैंक के साथ इंटीग्रेट करता है, जो बैंक को 24 आवर्स के ब्रांड नाम के तहत 24,000 एटीएम्स का मालिक है। यूजर्स किसी भी वॉलेट से एक्सचेंजेस सहित एटीएम में यूएसडीटी भेजने में सक्षम होंगे। Axie Infinity, which experienced a meteoric rise in popularity last year as one of the first crypto-focused computer games, could face significant selling pressure as $215 million worth of project's AXS tokens are unlocked in the coming days. Some 21.5 million tokens, almost 8% of the total supply, will be freed up when the vesting period expires October 24th, according to data site Token Unlocks. मंगलवार की प्रेस रिलीज के अनुसार अलाबामा, केंटकी और टेक्सास के अधिकारियों ने नॉन फंजिबल टोकन्स की इलीगल और फ्रॉडलेंट सेल्स का आरोप लगाते हुए स्लॉटी एनएफटी के अगेंस्ट सीज और डिसमिस दायर किया है। जॉर्जिया देश में स्थित स्लॉटी पर एनएफटी सेल्स से ऑनलाइन और मेटावर्स कैसीनो में फनलिंग प्रोसीड्स के समूह द्वारा आरोप लगाया गया था। रेगुलेटर्स के अनुसार कंपनी ने 10,000 स्लॉटी एनएफटीज जारी किए, जो निवेशकों को कैसीनो में ओनरशिप के हितों और उनके संचालन से निष्क्रिय आय अर्जित करने के अवसर प्रदान करते हैं। फाइलिंग स्लॉटी पर उपयुक्त सिक्योरिटीज बोर्ड्स के साथ अपने सिक्योरिटाइज्ड एनएफटीज को रजिस्टर करने में विफल रहने के कारण राज्य रजिस्ट्रेशन लॉज का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाती है। In a recent study published by Jose Simeon, Central American University in El Salvador, 77.1% of respondents say that they want the Salvadoran government to stop spending public money on Bitcoin. Moreover, only 24.4% of respondents say they have used Bitcoin as a means of payment since the country's government recognized it as legal tender last year. The survey, conducted by the privately owned but non-profit Central American University, polled local Salvadoran residents regarding their opinion on Legislative Decree number 57, which recognized Bitcoin as legal tender in El Salvador on September 7, 2021. A total of 1,269 valid interviews were collected during September 2022, with a reported margin of error of 2.75% on a 95% confidence interval.
Although there was no direct causal link between the adoption of Bitcoin and the country's economic situation, 95% of survey respondents say their lives stayed the same or have gotten worse since Bitcoin became legal tender. Well, that's all in today's bulletin. For more such updates, do like, subscribe and share to 3.0 TV. Wishing you all a very happy and safe Diwali. Hello and welcome to this weekly wrap. This is Manoj Dara. So cryptocurrency markets traded in a narrow range for the most part of the week as the impact of macroeconomic factors on risk assets is increasing as the US inflation is getting stronger. Both the crypto and the traditional markets are facing a raging storm, and the market participants fear that a possible global recession will soon break out. Market participants also anticipate that the US Federal Reserve will almost probably increase interest rate once more during the rate setting meeting, which is scheduled in November. However, the focus now moves to the outlook for the rates in the next meeting, which is expected to take place in December. So, if we talk about Bitcoin, was trading at $19,000, down 1.17%, while Ethereum, the second largest crypto, was trading lower by 1.4% at $1,280. If we talk about the overall market cap of the cryptocurrencies, which fell from $907 billion, was trading down by 1.6%, while the total market volume over the last 24 hours was at $48 billion, up by 11.7%. IC15 index of cryptocurrency was trading down by 1.72% at 27,081 points. इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान क्रिप्टो करेंसी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को विकसित करने की भारत की योजना का खुलासा किया। सीतारमण ने पहले क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को निर्धारित करने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की भी बात कही और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क का हवाला देते हुए मेन स्ट्रीम के लिए क्रिप्टो अपनाने के बारे में संदेह जताया है। हालांकि 15 अक्टूबर को उन्होंने लोकल इंडियन रिपोर्टर्स से बात की। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि G20 के सदस्यों ने क्रिप्टो एसेट को प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर देते हुए समान चिंता व्यक्त की है। Flipkart, India's homegrown e-commerce marketplace in partnership with eDAO, a Polygon incubated organization that designs and launches global art, media and entertainment IPs at scale into the world of Web3, yesterday announced the launch of Flipverse, a metaverse space where consumers can discover products in a photorealistic virtual destination and shop on Flipkart app. Flipverse will offer gamified, interactive and immersive shopping experiences for consumers in a digital world by giving them access to various brands, supercoins and digital collectibles. The objective of the launch is to flip the shopping narrative, allowing consumers to get closer to their favorite brands in a metaverse where the communication runs two ways. Flipverse will be available on Flipkart's newly launched platform Firedrops, which can be accessed from the e-commerce platform's app. Flipverse will enable a multiverse of brands to create unique product launches, discovery, and inspiring experiences to attract and engage users. At the same time, it will give brands the ability to generate and create their metaverse-ready digital twin in the virtual world. Flipverse's first phase is an Android-only experience that will be available for a week. दुबई में अजमन पुलिस डिपार्टमेंट मेटावर्स के भीतर सर्विसेज प्रदान करने वाली दुनिया की पहली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बन गई है। अजमन पुलिस जनरल कमांड ने जीटेक्स टेक्नोलॉजी वीक के दौरान रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप नाम के एक न्यू इनोवेटिव सर्विस की शुरुआत की, जिसे आम जनता दूर से पुलिस से संपर्क कर सके। दुबई मेटावर्स फोरम में अजमन पुलिस जनरल कमांड के अधिकारी भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अब्दुल्ला अबू शेहाब के अनुसार बल और भागीदारी लॉ इन्फोर्समेंट में मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए की गई थी। Ephraim Eisenberg, who claims to be part of a group that stole $114 million from decentralized crypto exchange Mango Markets last week, returned $67 million to the Solana-based DeFi hub on Saturday, defending his actions, which some have claimed an exploit, as both legal and highly profitable. Today's tweets from Eisenberg, who was accused of being the Mango exploiter this week after
allegedly carrying out similar attacks in the past, marked the first time he has publicly acknowledged his role in the exploit. I believe all of our actions were legal, he stated on Twitter. हॉरिजॉन वर्ल्ड्स मेटा फ्लैगशिप वर्चुअल रियलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू में साल के अंत तक 5 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। हालांकि उस आंकड़े को संशोधित कर 2,80,000 कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी को अपने यूजर बेस के विस्तार में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा हासिल इंटरनल मेमोज और डॉक्यूमेंट्स के अनुसार एक्टिव यूजर्स की वर्तमान संख्या 2 लाख से कम है। स्प्रिंग के बाद से यूजर एक्टिविटी में लगातार गिरावट आई है। कई लोगों ने सिर्फ 1 महीने के प्ले के बाद प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है। ऐसे में जो प्लेयर्स रुकते हैं वे अवेलेबल वर्ल्ड्स के सिर्फ 9% में विजिट करते हैं, जिसमें ज़्यादातर 50 विजिटर्स हो सकते हैं, जबकि ज़्यादातर डिजिटल डेस्टिनेशंस को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हॉरिजॉन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से भी पीछे है, जो कंकरेंट यूजर्स के वर्चुअल सोशल एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। Terra developers floated a new proposal earlier this week to resurrect the once mighty network despite the fact that DogeCoin, the platform's controversial co-founder, is wanted on fraud charges. The proposal, dubbed the Terra Expedition, is a revised version of the Terra network's original developer mining and developer alignment programs. The new program would be supported by 9.5% of the total supply of Luna tokens set aside for the launch of a new Terra blockchain. The proposal seeks to better align network incentives in order to attract developers, gain new users and promote liquidity. तो क्रिकेट के दुनिया के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारत के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक, उसने एक प्रेस रिलीज के अनुसार डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म रारियो के साथ साझेदारी करके नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। तेंदुलकर क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने वाले NFT प्लेटफॉर्म रारियो में एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होंगे। ऑफिशियल NFTs के रूप में तेंदुलकर के जीवन और करियर के प्रतिष्ठित क्षण अब सिर्फ rario.com पर ही उपलब्ध होंगे। एरॉन फिंच, फैब डू प्लेसिस, ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान सहित दूसरे प्रसिद्ध क्रिकेटरों के साथ विशेष साझेदारी हासिल करने के बाद तेंदुलकर रारियो का सबसे बड़ा नाम है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के 2 अन्य पूर्व कप्तानों महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने भी फैन क्रेज के साथ साझेदारी करके मेटावर्स में प्रवेश किया है, जहां उनके प्रशंसक प्लेयर्स कार्ड्स हासिल कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। Oscar winner actor Anthony Hopkins' first NFT art collection titled The Eternal Collection sold out in less than 7 minutes on NFT marketplace OpenSea. The collection consists of over 1,000 original art pieces inspired by the actor's decade-long Hollywood career, with visual nods to his performances in films such as Silence of the Lambs, for which he won an Oscar for his performance as Hannibal Lecter, and TV series Westworld. Orange Comet Incorporation, a LA-based NFT and Web3-focused design agency co-founded by Hollywood producer Dave Broom, ex-NFL player Kurt Warner and musician Gloria and Emilio Estefan, created the collection. US-based film and entertainment studio Warner Bros. काल्पनिक क्लासिक, फैंटेसी क्लासिक, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग को कलेक्टिबल NFTs की एक सीरीज के रूप में जारी करेगा। 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च होने वाला NFT ड्रॉप वार्नर ब्रोस मूवीवर्स नाम के एक नई Web3 मूवी पहल का हिस्सा है। ड्रॉप वार्नर ब्रदर्स को अपनी पॉपुलर फिल्मों में डिजिटल कलेक्टिबल्स को ड्रॉप करने वाले फर्स्ट मेजर मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक के रूप में चिन्हित करता है। यूजर्स द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स NFTs के लिए 2 ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। मिस्ट्री एडिशन है, जिसमें यूजर फिल्म में द शायर, रिवेंडेल और माइंड्स ऑफ मोरिया लोकेशंस के आधार पर रिस्पेक्टिवली एक कॉमन, अनकॉमन और रेयर NFT को मिंट करते हैं। इन NFTs में यूजर्स को फिल्म के एक्सटेंडेड 4K वर्जन, 8 घंटे की विशेष सुविधाओं और कमेंट्री के साथ साथ लोकेशन स्पेसिफिक इमेजेस और AR कलेक्टिबल्स तक पहुंच मिलती है। इस ऑप्शन में हर एक $30 की लागत वाले 10,000 NFT शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन एपिक एडिशन है, जिसकी कीमत 999 NFTs के लिए $100 है। उनमें एक्सटेंडेड 4K फिल्म और 8 घंटे की स्पेशल फीचर्स और कमेंट्री के अलावा द शायर, रिवेंडेल और माइंड्स ऑफ मोरिया के लिए इमेज गैलरीज और AR कलेक्टिबल्स शामिल हैं। Well, that's all in this episode of Weekly Wrap. For more such updates, do like, subscribe and share to 3.0 TV. Wishing you all a very happy and safe Diwali.